Good evening, everyone. Welcome to the TSL, the Super League. Another wonderful match at the Fatima Cricket Ground, and this is your commentator Shaleen Gupta, welcoming all the viewers and spectators for this wonderful match. This match is happening between two absolutely brilliant teams. The Jbcn Avengers are locking horns today against the Mavericks, and the news from the center is that the Avengers have won the toss and they have elected to field first. The Mavericks have started well, 13 without loss in the second over. That's a good start by all means. Vineet is bowling his first over. He's bowled a good 5 deliveries. This is the last one of his first over. Oh, and that's hit in the air. Could be a boundary here. That is a boundary. What a shot that is by Amit Singh. And that was deliberately played in the air. There was no fielder in the deep cover region. Wonderfully played by Amit. Just have a look at that. He ensured that he hit it in the gap. And that's a wonderful boundary. One bounce into the fence. What a start by a couple of bounces. I beg your pardon there. What a start by Amit Singh and Mavericks. 2 overs have been bowled, 17 without loss. And Rayad Merchant, the captain of the Jbcn Avengers, coming into bowl his second over. He started off really well. And he's such a wonderful bowler to watch. A wonderful captain as well. But that's a wonderful start by a Maverick team. Sandeep Valecha on strike. Right to Sandeep. Oh, and what a delivery. Extracting some bounce out of that pitch. Rayad Merchant. This is just his second over and the third of the innings. That's a good start to the over. Pitching it in the good length area around the off stump line, and that's what he needs to bowl. And he's so good at that line. Keeps on bowling there consistently. This time probably, oh, and that's a wide, and that's not a good piece of work by the wicketkeeper. Too slow on that delivery, and that has gone for a boundary as well. So 5 runs gifted by Rayad, and we were praising his line, and that's what happens when the commentator's curse sometimes works against the player. Probably that only happened on that occasion. He missed the line completely. Another good delivery, and that's a good comeback. So 2 dots in this over. That's a slow one, and that's edge towards the third man for a single. That was a full toss and probably missed the trick there, the batsman. Sandeep Valecha taking a single on that delivery. Could have hit it outside the park if that would have connected well. That's a wonderful shot. Could be a boundary here. What a shot that is by Amit Singh.
Straight down the ground for a boundary. Just have a look at that. Wonderfully played. That was a short delivery and he just smacked it over the bowler's head for a boundary. What a shot that was. That's a brilliant work there by Amit Singh. Oh, and he's got him. He has cleaned him up. What a delivery that was. Stunning bit of work there by Rayad. And that is why he's such a wonderful bowler. Just have a look at that delivery. Pitched in line and just coming back sharply into the right-hander. Oh, and he's cleaned him up. No chance for the batsman there. And probably he was slightly late in judging the swing, but the damage had already been done. Wonderful wicket by Rayad. We'll show you the replay once again. Just have a look at that. What a lovely start by Rayad Merchant. He's taken his first wicket in this innings and given the breakthrough to his team. What a delivery that was. Wow. You got to admire that brilliance by the captain Rayad Merchant. And the first wicket is down for the Mavericks, 27 for 1 in just the third over. They've started off well in terms of the run rate. Just have a look at that. Current run rate is 9.53. But then they've lost their opening batsman Amit, who was playing so well. And Pratik Desai is the new batsman. He'll be taking strike, and this is the last delivery of the second over of Rayad Merchant. It's a wonderful start by him in his spell. He's taken a wicket as well and given the breakthrough to his team. Let's see how Pratik Desai faces a wonderful batsman, a genuine all-rounder. Balls with a new ball as well for the Mavericks. Let's see how he bats today. Oh, and this time the first delivery he faces in the air, and that should be a boundary. What a shot that is. Brilliant stuff there by Pratik. Just have a look at that. Doesn't wait for the right delivery, just plays it on the up. Oh, that's a wonderful piece of batting, just showing the face of the bat brilliantly there. Straight down the ground and no chance for the mid-off fielder. And that's the end of a productive over in terms of runs. 14 runs came off that over, but an important wicket gone. But Pratik Desai, what a start by him. The first delivery dispatched to the boundary. A strike rate of 400. Wow. 3 overs, 31 for 1. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. It seems this would be 6 or 7 runs minimum. Just have a look at that. Not at all good backing up. Three overs, 3.1 overs and 37 for 1, 6 on that delivery. Coming in with his next delivery, Vineet. That's a good one, but played well. A quick single taken by playing it in the mid-wicket region. Pratik back on strike, and Sandeep doing a good job here. 11 of 8 deliveries. Oh, and that's a wonderful piece of bowling there. A dot delivery. Another good delivery and played it straight back to the bowler. Oh, and that's a big one. Could be a huge six here. That's a big six. Wow, what a shot that is. Pratik Desai is on fire right from the word go since he has come today at the crease. Just have a look at that. A slower delivery probably. And that was a dolly with Pratik in such form. What a shot that was. A huge six. Almost out of the park there. Brilliant shot by Pratik. Wonderfully played. That was a
Foolish delivery, but quite a slow delivery. That's a good comeback by Pratik, probably bowling the cutter this time. A dot delivery to end the over. And the score after 4 overs is 44 for 1. Quite an expensive over, 13 of that over. And the run rate is brilliant, 11 per over. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Oh, and starts with a boundary. No, just a single. Beg your pardon, there was a fielder. That's a good delivery and a good start to the over by Wasim Lashkaria. One of the pillars of this team, this guy, a genuine all-rounder. He's played so well in the previous matches and also a few other tournaments that he's been a part of. Jbcn Avengers. Oh, and that's a good delivery, played well by Pratik Desai. Just a single there in the mid-wicket region. Another good delivery by Wasim. A quick single taken. Sandeep is playing a wonderful innings here, and so is Pratik Desai. A good delivery this time by Wasim. Should just be a dot, and that's a good start by Wasim to his spell. This should be a wide. That's his way outside that wide mark, and a poor delivery. He's bowled well in this over, but extras can never be pardoned in this format. Every delivery, every run is crucial, especially when you have to chase a score. That's a good shot, straight to the fielder, and he's going to be run out here. This is really poor work there by both these batsmen. Not at all a good piece of calling. Just have a look at that. What were they doing there? And to be honest, it was really hard on Sandeep. That was never a run. Pratik Desai was in a hurry to take that run and led to Sandeep's wicket as a run out. And the second wicket is down for the Mavericks. 49 for 2 after 5. So that's a good over in terms of not only the runs scored, just 5 of them in this over, but also a very important wicket. Just have a look at that. That was straight to the fielder and he was not ready for the run, but Pratik Desai was already at the other end. That was not at all good piece of calling by Pratik. Led to a run out, and Sandeep Walecha, after playing a good innings and a promising start by him, goes back to the pavilion. He scored a good 14 runs of just 12 deliveries, and it's 49 for 2 after 5 overs. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
Rohan Dharia coming to bowl his first over, starting his spell. Oh, and that's a good one. Rahul Keswani is a new batsman, playing his first delivery nicely. That was a good delivery as well. Oh, and this time it should be a wide. What was he trying to do there, Rahul? He tried to hit it once the ball passed him. So that was a really innovative attempt by Rahul. Could not connect though. And that's a 50 up with that wide. Oh, and that's a good comeback. Wonderful delivery by Rohan. And we would like to inform our viewers that we would be presenting the Hindi commentary as well in TSL matches that we've already been doing since the start of the TSL. That's a good shot played towards the long on, just a single. And we thank all our viewers for supporting us so much during all these events being organized by the Jfsc, the Jolly Friends Sports Club. That's a good shot again, played towards mid off for a single. Ryan Merchant, the captain, does well there. Not only appreciating us but also grateful to your support, especially your comments on the commentary piece. Motivate us quite a lot, and we try to do it to the best of our abilities every time we come for a match. That was a wide and a single taken, so 2 runs added to the tally. Should be another wide, it seems. Oh, he's just lucky there. The umpire thinking otherwise. And a quick single taken this time again. Could be a chance of a run out, but this time they've completed the run, but that was again messy again. So the calling has not been up to the mark at all, and we'll take a quick break and be back soon. 6 overs have been bowled. 55 for 2, a run rate of 9.17. We'll be back after a short commercial break with the Hindi commentary now. Stay tuned, viewers. वापस आ गए हैं हिंदी कमेंट्री के साथ, और एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का इस बेहतरीन T20 मुकाबले में। द सुपर लीग TSL प्रतियोगिता खेली जा रही है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर, और मैं शालीन गुप्ता आपका कमेंटेटर एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। छः ओवर में 55 रन का स्कोर हो गया है। 2 विकेट गिर चुके हैं मैवरिक्स के, और Jbcn एवेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया आज। हालांकि अभी तक वो फैसला बहुत अच्छा तो साबित होता हुआ नहीं लग रहा है। 9 रन प्रति ओवर से रन बनाए जा चुके हैं। वसीम लश्कारिया आए अपने अगले ओवर के साथ। बढ़िया शुरुआत, यहाँ पर 1 रन आसानी से मिलेगा। प्रतीक देसाई बेहतरीन बल्लेबाज हैं। 14 पर आ गए हैं 12 गेंदों के बाद, और बड़ा छक्का लगाया उन्होंने अपनी इस पारी में अभी तक। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 ही रन। वसीम की अच्छी गेंदबाजी, उन्होंने पहले ओवर में
बढ़िया गेंदबाजी कराई और एक रनआउट भी अर्जित किया अपने ओवर में, और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था वो, संदीप का विकेट। बढ़िया गेंदबाजी, इस बार फिर से तेजी से एक रन चुराया यहाँ पर, बहुत ही हल्के हाथों से खेला प्रतीक देसाई ने और कवर पॉइंट की दिशा में एक रन चुराया। और ये बच कैसे गए यहां पर, तारीफ करनी होगी यहां पर गेंदबाज की। ऐसा लगा कि ऑफ स्टंप के बहुत पास से निकली गेंद। ये देखिए, ओहो कैसे बचे हैं ये। जी हाँ, उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होगा। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। और यही देखिए वसीम लश्कारिया भी दिखा रहे थे कि कितना कम अंतर था गेंद और स्टंप्स के बीच में। देखिए हो क्या गेंदबाजी है, वाह। और ये बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर बच गए। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं वसीम, छोटी गेंद और बढ़िया शॉट खेला, तेजी से एक रन लिया प्रतीक ने। और ये कोई भी बैकअप नहीं है वहाँ पर, तो 2 रन हो जाएंगे। ये एक दूसरी बार ये गलती हो रही है इस पारी में कि बैकिंग अप उतनी अच्छी नहीं। बढ़िया गेंदबाजी वसीम की एक बार फिर से, और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर के बाद स्कोर है 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 5 रन दिए उन्होंने अपने इस ओवर में। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। रोहन दारिया आए अपना अगला ओवर लेकर। बेहतरीन शुरुआत डॉट गेंद से, कट करने का प्रयास वहां पर प्रतीक का, लेकिन चूक गए पूरी तरह से। अच्छी गेंद थी और पड़ के हल्की सी तेज भी हुई। रोहन की खास बात, बेहतरीन ऑफ स्पिनर हैं। और ये तेजी से एक रन लेने का प्रयास और बच गए यहां पर। यहां रनआउट का एक मौका बन चुका था, सही समय पर प्रतीक ने वापस भेजा उन्हें। एक और अच्छी गेंद, इस बार तेज गेंद डाली थी, पुल करने का प्रयास, लेकिन चूके वहां पर प्रतीक। और ये फुल टॉस यहां पर पूरी तरह से भुना नहीं पाए इसे। बड़ा शॉट इस पे लग सकता था, लेकिन एक ही रन मिला कवर्स के क्षेत्र में। अच्छा शॉट नहीं था प्रतीक के द्वारा। ऐसी गेंदें आपको ज्यादा नहीं मिलती, तो आपको पूरा भुनाना चाहिए। और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, और ये आउट। क्या जबरदस्त गेंदबाजी है, बाहरी किनारे लिया बल्ले का और ऑफ स्टंप के बाहर ही डाले आ रहे थे। सिवाय उस फुल टॉस की सारी गेंदें बहुत ही अच्छी थी। और ये देखिए, इस बार लेग स्पिन डाली शायद, जी हाँ, और कट करने का प्रयास था, लेकिन चूक गए पूरी तरह से यहां पर बल्लेबाज। और पेविलियन की तरफ वापस जाते हुए राहुल केसवानी।
और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ 61 के स्कोर पर। आप देखिए इस बार शायद लेग कटर ट्राई किया यहाँ पर, ये देखिए। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर उंगलियों को किस तरह घुमाकर तेज लेग कटर डालने का प्रयास, और सफल भी हुए इसमें। बाहरी किनारा लगकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ 61 के स्कोर पर। एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर जेबीसीएन एवेंजर्स के गेंदबाजों के द्वारा। रोहन की एक और बेहतरीन गेंद और ओवर की समाप्ति। नए बल्लेबाज ने उसे अच्छे से डिफेंड किया, सही तरीके से रोका और एक भी रन नहीं लिया आखिरी गेंद पर। 8 ओवर के बाद स्कोर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और एक छोटा सा विराम लेंगे वापस और फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अखिल सेठ आए हैं आदित्य को गेंदबाजी, प्रतीक को माफ कीजिएगा, गेंदबाजी डालें। क्या शुरुआत की है, वाह। बेहतरीन गेंदबाज हैं और परीक्षा लेते हैं बल्लेबाज की। इनकी खास बात यह है अपनी फ्लाइट से, देखिए क्या बेहतरीन फ्लाइट डाली पहली गेंद पर। और प्रतीक यहाँ पर बच गए, तारीफ करनी होगी यहाँ पर अखिल की। और इसी गेंद को आप पैर बढ़ाकर सीधे बल्ले से खेलेंगे तो शायद आसानी से आप इसे ड्राइव करके लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन ले लें, लेकिन क्योंकि पहली गेंद थी इसलिए प्रतीक ने शायद हल्के से खेला उसे, और इस बार 1 रन लिया लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर। बढ़िया शॉट प्रतीक का। और ये छोटी गेंद थी, बाहर की गेंद, बढ़िया शॉट। ये 4 रन मिलने चाहिए यहाँ पर, कोई भी क्षेत्र रक्षक नहीं है और ये 4 रन। बेहतरीन शॉट आदित्य का, उनकी दूसरी गेंद ही थी ये। देखिए क्या बेहतरीन शॉट मारा है, वाइड भी हो सकती थी अगर छोड़ते तो, लेकिन उन्होंने चौका लगाना ज़्यादा उचित समझा और सही निर्णय भी। बेहतरीन चौका यहाँ पर। बढ़िया शॉट इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में। क्या यहाँ पर दूसरे रन के लिए आएंगे? जी हाँ, लग रहा है प्रतीक आ जाएंगे। बेहतरीन यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ज़बरदस्त खेल यहाँ पर। 2 रन ले लिए, पुल किया था लॉन्ग ऑन से दूर। बहुत ही बढ़िया शॉट और प्रतीक का ज़बरदस्त आक्रामक रुख यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स में। बहुत तेज़ी दिखाई और 2 रन लिए। और इस बार वापस बैठ कर मारते हैं ये स्ट्रोक। बहुत ही उनकी अजीब सी शैली है और बहुत ही इफेक्टिव इम्पैक्टफुल शैली है। शॉट में दम बहुत होता है, बल बहुत लगाते हैं भुजाओं का। आदित्य की बात कर रहा था मैं यहाँ। प्रतीक वापस स्ट्राइक पर। बढ़िया शॉट, एक भी रन नहीं लेकिन। और ये ओवर की समाप्ति 9 ओवर के बाद 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
रोहन धारिया आया अपना अगला ओवर लेकर, बेहतरीन शुरुआत, 1 रन लिया तेजी से आदित्य ने। ये देखिए, इसी शॉट की इनकी बात करते हैं, बैठ कर मारते हैं ये शॉट। ये देखिए, बढ़िया शॉट प्रतीक के द्वारा। क्या यहां पर इन्हें कुछ रन मिलेंगे? जी हाँ, 1 रन मिला आसानी से। और ये बच गए हैं क्या, या क्लीन बोल्ड हो गए हैं? जी हाँ, अंपायर ने शायद बोला कि बच गए हैं। आप देख सकते हैं रिप्ले यहाँ पर, बेहतरीन गेंदबाजी। और कैसे बचे ये? बहुत ही करीबी मामला है यहाँ पर, एक भी रन नहीं। रोहन दारिया तारीफ करनी होगी, क्या गेंदबाजी डाल रहे हैं। बेहतरीन गेंद, एक बार फिर से 1 रन लिया शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खेलकर। और ये वाइड गेंद होनी चाहिए। जी हाँ, दोनों हाथों को इन्होंने अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। शॉट मारने से पिछले गेंद पर दोनों हाथों को रोका वहां पर प्रतीक ने, इसका नतीजा हुआ कि उन्हें वाइड मिला। और ये अच्छी गेंदबाजी, पिछली 2 गेंदें बहुत ही बेहतरीन। ये तो ब्लॉक होल में थी और बच गए यहाँ पर। 10 ओवर की समाप्ति हो गई, 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर मैवरिक्स के। 7.3 रन पर ओवर पर आ गया रन रेट। तारीफ करनी होगी यहाँ पर JBCN एवेंजर्स के गेंदबाजों की। और अब ड्रिंक्स ब्रेक का निर्देश यहाँ पर अंपायरों का, अंपायर ओम सिंह का निर्देश ड्रिंक्स ब्रेक का। बेहतरीन अंपायर हैं, ज़बरदस्त अंपायरिंग करते हैं और तारीफ करनी पड़ेगी इनकी। और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे दूसरे अंपायर, अंपायर यदुचूरी, इस मैच में और इस प्रतियोगिता में। इन दोनों अंपायरों का बहुत ज़बरदस्त योगदान है। और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वापस आपके साथ जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
अखिल सेठ वापस आए हैं आक्रमण में। इनका दूसरा ओवर और 10 ओवर के बाद 73 रन है 3 विकेट के नुकसान पर मैवरिक्स के। बढ़िया वापसी जेबीसी ने एवेंजर्स की। एक समय 9.5 के ऊपर का रन रेट था और अब सिर्फ 7.3। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, और क्या दूसरे रन के लिए आएंगे प्रतीक? नहीं, एक ही लेंगे। और सही निर्णय। और प्रतीक का स्ट्राइक रेट यहाँ पर कम होता हुआ 23 गेंदों पर 18 पर आ गए हैं। एक समय बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से खेले थे, लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, और अभी तो 100 का भी नहीं है। और ये गिरावट जो है स्ट्राइक रेट में प्रतीक के, यही दर्शाता है कि कितनी ज़बरदस्त गेंदबाजी हुई है जेबीसीएन एवेंजर्स के गेंदबाजों द्वारा, खास करके स्पिनर्स की अगर बात करें तो। ये देखिए, और जैसे ही हमने इनकी तारीफ की, खराब गेंद डाल दी इन्होंने। एक ही रन होगा, हालांकि प्रतीक अगर छोड़ते इसे तो शायद वाइड मिल जाती उन्हें। अच्छी गेंद नहीं थी अखिल के द्वारा, लेकिन भाग्यशाली रहे कि बड़ा शॉट नहीं खाना पड़ा इस गेंद पर। कवर्स के क्षेत्र में 1 रन लिया प्रतीक ने हवा में खेलकर। बढ़िया शॉट, इस बार स्कूप किया। क्या यहां पर चौका मिलेगा? जी हां, 4 रन, बेहतरीन शॉट। तारीफ करनी होगी यहां पर आदित्य की। देखिए क्या जबरदस्त शॉट खेला। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी हालांकि, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उसे 4 रन के पार पहुंचाया, सीमा रेखा के पार, फाइन लेग के क्षेत्र में। बढ़िया स्कूप शॉट, स्वीप के अंदाज में स्कूप खेल लिया। और ये छोटी गेंद पर फिर से प्रहार किया, लेकिन एक क्षेत्र रक्षक मौजूद है। एक ही रन इस बार। और ये अच्छी गेंदबाजी। प्रतीक फिर चूके, उन्हें लगा शायद वाइड जाएगी, इसलिए उन्होंने शॉट को खेलने से पहले अपने आप को थोड़ा सा रोक लिया, और शायद यहीं पर उनसे गलती भी हो गई। डॉट चली गई गेंद। अखिल की अच्छी वापसी। बढ़िया शॉट, 1 रन लिया तेजी से भागकर। कवर्स पर रायत मर्चेंट ने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन बचा नहीं पाए, और ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा विराम लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जल्दी वापस आएंगे। योगेश जहांगीर आए हैं अपना अगला ओवर लेकर, पहला ओवर लेकर, माफ कीजिएगा, अपना स्पेल शुरू करेंगे। स्ट्राइक पर प्रतीक देसाई। और ये बेहतरीन शॉट, 6 रन मिलेगा यहां पर। क्या शॉट खेला है प्रतीक देसाई ने, ताबड़तोड़ छक्का, जबरदस्त प्रहार 6 रन के लिए। योगेश जहांगीर का स्वागत किया है छक्के से। देखिए छोटी गेंद और क्या जबरदस्त प्रहार, वाह, तारीफ करनी होगी इनकी। बड़ा छक्का प्रतीक देसाई के बल्ले से। और योगेश जहांगीर ने यहां पर शुरुआत की एक छोटी गेंद से, और सीमा रेखा के पार भेजा पहली गेंद पर प्रतीक देसाई ने।
योगेश की अगली गेंद और ये वाइड गेंद, और यहाँ पर कीपर से भी चूक हुई। 4 रन मिलेंगे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, 5 रन यहाँ पर। अभी अभी क्रिसमस समाप्त हुआ है और योगेश जहांगीर ने उपहार स्वरूप 5 रन यहाँ पर बल्लेबाज को दिए। पहली गेंद भी उपहार स्वरूप ही छोटी गेंद लग रही थी, ऐसा डाली थी। 11 रन बन चुके हैं एक गेंद पर। बहुत ही महंगा ओवर। योगेश बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन अभी तक एक गेंद पर 11 रन दे चुके हैं, और ये गेंद तो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 1 रन लिया। बढ़िया शॉट, 4 रन मिलेंगे यहां पर। बेहतरीन शॉट आदित्य के द्वारा, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। क्या शॉट लगाया है, और आपको दिखाएंगे रिप्ले। खराब गेंदबाजी योगेश के द्वारा है। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर हाथ खोलने का मौका दिया, और पॉइंट के क्षेत्र में 4 रन के लिए उसे सीमा रेखा के पार भेजा। क्या बल्लेबाजी आदित्य के द्वारा। शायद आज का सबसे बेहतरीन शॉटों में से एक लगाया आदित्य ने। और योगेश की यहां पर महंगी शुरुआत। बेहतरीन बल्लेबाजी आदित्य के द्वारा, तारीफ करनी होगी प्रतीक और आदित्य की। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं। 1 रन लिया तेजी से एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में, आसानी से खेलकर। और ये बहुत ही महंगा ओवर। 17 रन आ चुके हैं इस ओवर में, और इस ओवर में ऐसा लग रहा है कि 100 रन पूरे हो जाएंगे। 11.4 ओवर में 98 रन का स्कोर बन चुका, और वापस रन रेट अब बेहतरीन, लगभग 8 के ऊपर आ चुका है रन रेट ये। और ये अच्छा निर्णय रन ना लेने का। एक बार ऐसा निर्णय लिया था इस पारी में और विकेट गंवाया था राहुल का। प्रतीक की खराब कॉलिंग थी उसमें, तो इस बार सही निर्णय। और ये अंदरूनी किनारा, बच गए यहां पर। 1 रन लिया और दूसरे के लिए भी आना चाहेंगे। जी हां, 100 रन पूरे। इसी के साथ मैवरिक्स के और ये ओवर की समाप्ति भी होगी। 12 ओवर में 100 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, और बहुत ही महंगा ओवर ये। जी हां, 19 रन बने इस ओवर में। 81 पर 3 स्कोर था 12 ओवर में, और अब 100 पर 3 हो गया है। तो ये बेहतरीन बल्लेबाजी और कुछ हद तक खराब गेंदबाजी भी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और इस बार अंग्रेजी कमेंट्री के साथ वापस आएंगे, थोड़ी देर में जुड़ते हैं आपके साथ। बने रहिए। धन्यवाद। We are back live with the English commentary, and this is Rohan Dharia coming into bowl his third over. 12 overs have been bowled. 100 for 3 is the score for the Mavericks. That's a good start by Aditya. A single taken on in the long on region.
and that's a good delivery by Rohan. Prateek playing it back to the bowler. Prateek seems more comfortable with the quicker ones, it seems. When there are spinners in action, Prateek kinds of slows down. Oh, and this time probably he listened to what I was saying and trying to hit the big one. Just a single this time. Mid wicket does well in the deep. Prateek Desai has played a wonderful knock, but look at Aditya, 21 of just 13. Wow, that's the kind of impetus that you need in the middle overs. The acceleration. Oh, and that's a poor delivery. You can't blame the keeper here. Could be a boundary here, but the fielder does well. That's a good stop. So 3 runs added, a wide and a couple of runs. Just have a look at that. Poor delivery down the leg side. No chance for the keeper as well. And that's a wonderful stop by the fielder there. That was a very good effort. Another good delivery by Rohan Daria, coming back nicely. Oh, and that's a good delivery again. Will they come back for the second? Seems no, just a single. Mid wicket does well, coming from the deep into the ring and stopping the second run. And that's the end of a good over by Rohan Daria. 13 overs have been bowled, 105 for 3. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Wasim Lashkaria coming into bowl his next over. That's a good shot played. Will that be a third run there? It seems yes. They're running the third one easily, and will they come back for the fourth as well? Seems no. The keeper going all the way towards the deep backward square leg. That was not a good delivery. He played it well there. Let's have a look at the replay. That was on his pads and played it so well. Oh, and this time playing it towards the long off for a single, and a single taken easily by Prateek. He's trying to hit the big shots. That was his intention on the last delivery as well. Oh, and that's a good delivery, a good comeback.
Probably was expecting a wide there, Aditya, but the umpire not in his favor. That's a good delivery by Wasim. Coming into bowl is next delivery, Wasim Lashkaria. That's a good shot, but straight to the fielder, and he misses that. Rayad Merchant, the captain, not a good effort, and he'll give another extra run there. Sloppy bit of work there in the extra cover region by the captain. As a result, another run taken. That's a good shot, just a single again. The sweeper does well. In the air this time, and that's in the safe zone. Will be a couple. Cleared deliberately in the air, Prateek. We mentioned that he was eyeing the big shots. Let's have a look at that. He's trying to hit the big one once again, but getting the top edge and a couple of runs there. And that's the end of the 14th over. The score is 114 for 3. We'll take a quick break when we back soon. Stay tuned, viewers. Okay, Shed coming to bowl is next over. This is his third, and we are back in the 15th over. The run rate above 8 runs, and this time he's gone. The first delivery coming down the track, trying to hit the big one, but it seems. And is he not out? Well, we'll have to have a look at what the umpires have said there. It seems that he removed the bails ahead of the stumps. Was that the case? We'll have to just check with the umpire, but we'll have to first look at the replay there. Just have a look at that. And that was a no ball. Probably that was the reason why he was in the air this time. Will that be caught? Oh, and he's dropped him. So Aditya riding on his luck today.
One of the simplest catches that you will get on the cricket field, and he drops it. Akhil really unlucky to have missed Adit's wicket twice in 2 deliveries. Probably this was a free hit. I beg your pardon, that was not out. But still the catch was dropped. So a run given there, but that was not out at all. That was a free hit because of the no ball on the first delivery. Just a single this time. But why was that a no ball? We still need to figure it out. So we've got the confirmation no ball was because the wicket keeper did the stumping ahead of the stumps. So a very good decision by the leg umpire. $118 for 3 in 14.3. That's a good over by Akhil till now. A short delivery and poor delivery punished, but just a single. There's a fielder out there, Pratik Desai, not hitting it in the gap. He's played well. Pratik 35 of 36, and look at Aditya 32 of just 23, and he was almost gone there had the wicketkeeper not done that mistake of removing the bails ahead of the stumps. Oh, and this should be a no ball. That's a poor delivery. That's a big 6. Aditya is on fire. What a shot that is. Another no ball this time. No chance for that to escape from a no ball. Just have a look at that. Oh, and that was a really poor delivery. That was way over the waist height and dispatched and given the treatment. A huge 6, and that's another expensive over by the Jbcn Avengers bowlers. And they are losing the plot here. They had brought the run rate back to 7.3 after 10 overs, and just have a look at that run rate. Once again, it's almost above 9 runs an over in the air this time, and even if it gets caught, it's a free hit, so no chance of a wicket. But Rayad Merchant, the captain, drops the catch as well. So all's not going well there for the Jbcn Avengers. Just have a look at that. An easy chance missed by the captain, but no harm to the Avengers, as well as that was a no ball previous to the one bowled on this occasion, which was a free hit in the air this time. Another drop catch. This time Josepha not able to pick the catch there and trying to come back for the second. This is really good running by both these players. What is happening in the middle there? A lot of confusion and a lot of missed opportunities by Jbcn Avengers, and the score after 15 overs is 129 for 3 now. Could have been otherwise had that stumping been done in the right manner, and these are the moments that can let you down in the match. That's the end of the 15th over. The score is 129 for 3. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned. Josepha Kaiser coming into bowlers next. His first over being introduced in the attack just before the death overs. This is a 16th over and he starts off well. Josepha, this is just his first delivery, and that was a good one. Oh, and that's a good shot by Aditya. He's been on fire today. Could be a boundary here. Will be a boundary. What a shot that is by Aditya. Just have a look at that. Pitched up and played it straight over the bowler's head.
No chance for the bowler, and that's a wonderful shot. Raised away to the boundary. Oh, and that's a single. Have they taken a single? No. They decide against it. Just a dot delivery again. That's a good shot again. Sweeper is placed for that shot and just a single again. So good start to his over. And a good comeback after being hit for a boundary on the second delivery of his first over, Josefa. Just 5 of that 4 deliveries that he's bowled till now. Last 2 remaining in this over. A wonderful piece of bowling there. And that's the end of the over. 16 overs have been bowled, 134 for 3. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Akhil Seth coming to bowl his last over and allow us to switch to the Hindi commentary now till the end of this innings. स्वीप करने का प्रयास यहाँ पर और 1 रन मिलेगा डीप स्क्वायर के क्षेत्र में आदित्य को. जी हाँ, वापस आ गए हैं हिंदी कमेंट्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने. और 17वां ओवर चल रहा है. डेथ ओवर्स की शुरुआत हो गई है और ये खराब गेंद वाइड भी मिलेगी यहाँ पर और 1 रन अतिरिक्त तो जुड़ेगा ही. एक गेंद भी अतिरिक्त डालनी पड़ेगी. अखिल का आखिरी ओवर ये लेग स्टंप के बाहर पिच की और वाइड हो गई वो गेंद. और ये नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा. बहुत ही छोटी गेंद और 2 टप्पे के बाद बल्लेबाज के पास पहुंची और नो बॉल के साथ अब फ्री हिट वापस. तो यहाँ पर अतिरिक्त रनों की भरमार कर रखी है जेबीसीएन एवेंजर्स के गेंदबाजों ने. और मैवरिक्स की तो बल्ले बल्ले हैं. यहाँ पर एक और फ्री हिट. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे आदित्य. जी हाँ, बढ़िया शॉट और ये 4 रन. बेहतरीन बल्लेबाजी और इसी तरह की गेंदों का इंतज़ार करते हैं आदित्य. खतरनाक बल्लेबाज हैं. तारीफ करनी होगी इनकी. क्या शॉट लगाया है. देखिए, छोटी गेंद थी, फ्री हिट थी, आपको पता ही है कि नो बॉल जिसके पहले की देंगे. क्या करारा तमाचा लगाया यहाँ पर गेंद के ऊपर बल्ले से. जबरदस्त प्रहार. बॉटम हैंड का पूरा वहां पर बल का प्रयोग किया और इस बार तेजी से 2 रन के लिए आएंगे. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स. यहां पर तारीफ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की. क्या जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं यहां पर आदित्य खास करके. और ये इनका अर्धशतक भी पूरा हुआ इसी के साथ. जबरदस्त बल्लेबाजी आदित्य की. जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है. और 51 रन पर आ गए हैं सिर्फ 32 गेंदों के बाद. और प्रतीक देसाई जो इनसे काफ़ी पहले आए थे, अभी तक 38 पर ही हैं 40 गेंदों के बाद. तो आदित्य की यहां पर सराहना करनी होगी. प्रशंसनीय पारी है आदित्य की.
हवा में खेला हुआ शॉट और ये बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन मिलेगा। दूसरे के लिए आना चाह रहे हैं क्या? आ भी गए हैं प्रतीक यहां पर। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्या भागते हैं, तेज धावक हैं प्रतीक देसाई। अच्छे क्षेत्ररक्षण के बावजूद 2 रन ले लिए। इससे अच्छी तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो नहीं सकती। प्रतीक की तारीफ करनी होगी यहां पर। और ये फिर से आधी पिच पर गेंद डाल रहे हैं और क्या थ्रो था ये। अखिल यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे आप आधी पिच पर गेंद डालेंगे, हाफ ट्रैकर्स डालते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। वाइड नो तो फिर जानी ही है। 13 रन दे चुके हैं अपने आखिरी ओवर में और 150 के करीब पहुंचने वाला है स्कोर। और ये ओवर की समाप्ति यहां पर 17 ओवर के बाद स्कोर 147 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी 3 ओवर बचे हुए हैं। एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और इस बार ये आउट हो गए। आखिरकार विकेट का पतन हुआ और ये देखिए इस बार तो पीछे से ही पकड़ी है विकेट कीपर ने गेंद और आउट भी हुए आदित्य। आखिरकार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के बाद चौथा विकेट गिरता हुआ यहां पर और हुजैफा ने अब तक पहला विकेट चटका। दूसरे ओवर की उनकी पहली गेंद और 18वां ओवर शुरू होता हुआ। तारीफ करनी होगी यहाँ पर हुजैफा की। 147 पर 4, 17.1 ओवर में। और एक छोटा सा विराम लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आशीष रेदेजा हैं नए बल्लेबाज, बाएं हत्था बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट खेलने में माहिर। और देखते हैं आज क्या कर पाते हैं। हुजैफा की दूसरी गेंद और ये पहले ही गेंद से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास उनका और 2 रन के लिए वापस आएंगे आसानी से। अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और 2 रन मिले फाइन लेग की दिशा में खेलकर। और ये बेहतरीन शॉट, क्या ये चौका मिलेगा यहां पर? जी हाँ, 4 रन इसीलिए भेजा है आशीष को। क्या बल्लेबाजी है दूसरी गेंद पर, ताबड़तोड़ प्रहार। ये देखिए जबरदस्त बल्लेबाजी, ऊपर की गेंद और क्या खेलते हैं, वाह।
4 रन सीधे शॉट खेलकर खेला। हाँ, अगली गेंद छोटी गेंद और इस बार फिर से करारा प्रहार, लेकिन डीप मिड विकेट वहां पर तैनात है। और ये बेहतरीन शॉट प्रतीक के द्वारा, क्या है, बड़ा छक्का है। जी हाँ, जबरदस्त प्रहार, 4 रन के लिए। छक्का तो नहीं हुआ लेकिन चौका मिल गया। तारीफ करनी होगी, छोटी गेंद ये देखिए, और पुल शॉट के माहिर हैं। चार रन के लिए इस गेंद को बाहर भेजा, लॉन्ग ऑन से दूर खेलकर। और ये 1 रन, फिर से अंदरूनी किनारा लगा और 1 रन। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 18 ओवर के बाद। स्कोर 159 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और 12 रन का एक महंगा ओवर समाप्त होता हुआ हुजैफा का। हालांकि एक महत्वपूर्ण विकेट मिला उन्हें। एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। रायद मर्चेंट आ रहे हैं अपना आखिरी ओवर लेकर। 19वां ओवर इस पारी का, सिर्फ 2 ओवर बचे हैं, 12 गेंदें। बढ़िया शुरुआत रायत की। 1 रन मिलेगा, हालांकि अंदरूनी किनारा लगा, यहाँ पर निचला किनारा लगा बल्ले का, और गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में। प्रतीक ने स्ट्राइक बदली और आशीष के पास स्ट्राइक। अब देखना है रायद आशीष को कैसे गेंदबाजी डालते हैं।
अच्छी गेंदबाजी, इस बार रनआउट का यहां पर मौका और चूके रायद, तेज रन लिया प्रतीक देसाई ने। आशीष बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, बढ़िया गेंदबाजी रायद के द्वारा। और इस बार अंदरूनी किनारा और 4 रन मिलेंगे यहां पर। किस्मत भी आज साथ नहीं दे रही है जेबीसीएन एवेंजर्स के गेंदबाजों का। और एक और चौका, जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर प्रतीक की। हालांकि इस बार थोड़ा सा भाग्य ने भी साथ दिया। रायत की अगली गेंद, बेहतरीन शॉट, पुल किया इस बार और ये चौका होना चाहिए ऐसा लग रहा है। जी हां, 4 रन और 50 रन भी पूरे इसी शॉट के साथ। प्रतीक देसाई के बेहतरीन बल्लेबाजी, शॉट देखिए, तारीफ करनी होगी यहां पर। 4 रन के लिए इस शॉट को खेला, पुल किया रायत की छोटी गेंद को। हालांकि इतनी छोटी भी थी नहीं गेंद, लेकिन जिस हिसाब से पुल किया, तारीफ करनी होगी यहां पर प्रतीक की। आपको रिप्ले दिखाएंगे फिर से एक बार, ये देखिए। बेहतरीन शॉट, उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक ही रन। क्या जबरदस्त शॉट था, करारा प्रहार। आखिरी गेंद रायत के स्पेल की, और ये भी महंगा ओवर है। 11 रन जा चुके हैं इस ओवर में, तीसरा ओवर है इनका, 3 ही डाल पाएंगे क्योंकि 19वां ओवर है इस पारी का। और अच्छी समाप्ति इनके तीसरे ओवर की। हालांकि ओवर में 11 रन तो बन ही गए, 170 रन स्कोर हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी ओवर बचा है, एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और ये आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं वसीम लश्कारी। अब 20वां ओवर है इस पारी का। आखिरी 6 गेंदें, देखते हैं कितने रन देकर जाती है। प्रतीक देसाई जबरदस्त फॉर्म में है। बेहतरीन शॉट, बड़ा शॉट है, लेकिन क्या ये छक्का है? कैच होने का भी यहां पर आसार है, और ये कैच तो छोड़ दिया। 2 रन मिल गया आसानी से प्रतीक को। हवा में खेला हुआ गगनचुंबी शॉट था, जबरदस्त प्रहार। लेकिन ये कैचेस आपको लेने होंगे अगर आपको मैच में वापसी करनी है। ये देखिए, कैच तो छूटा ही, 2 रन भी बने और
वापस स्ट्राइक पर आ गए हैं प्रतीक, तो अभी भी बड़े शॉट्स खेलने का पूरा उनके पास अवसर है। और ये क्षेत्ररक्षण ही है जो आज जेबीसीएन एवेंजर्स को यहाँ पर मुश्किल में डाल सकता है। बहुत कैचेस छूटे हैं, खराब क्षेत्ररक्षण हुआ है, बैकिंग अप सही नहीं हुई है। बेहतरीन शॉट, पुल शॉट किया और एक ही रन डीप मिड विकेट पर। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं, बेहतरीन शॉट और ये एक ही रन होगा। बढ़िया बल्लेबाजी आशीष के द्वारा, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। भी आएगा। वसीम की अगली गेंद, 3 गेंदें बची हैं इस आखिरी ओवर में। बेहतरीन गेंदबाजी और ये एक डॉट गेंद। बढ़िया शॉट, आगे बढ़कर खेला और यहां पर 2 रन के लिए वापस आएंगे। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण और ये रन आउट। जी हां, यहां पर अंपायर ने उंगली शायद उठा दी है, ऐसा लग रहा है, और प्रतीक देसाई आउट हो गए हैं। जी हां, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, तारीफ करनी होगी यहां पर। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था और 174 पर 4 हो गया है स्कोर, 5 हो गया है, माफ कीजिएगा। देखिए कैसे आउट हुए यहां पर। आगे माफ कीजिएगा, ये पिछली गेंद थी। और ये रन आउट वाली गेंद जिसका आपको रिप्ले दिखाएंगे। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था। ये देखिए बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथ में। तब तक लाइव आते हैं आखिरी गेंद इस ओवर की और पारी की। बढ़िया शॉट खेला है यहाँ पर और ये 4 रन मिलने चाहिए यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बढ़िया तरीके से रोका। तीसरे रन के लिए आ रहे हैं और क्या ये आउट होंगे? जी हाँ, तीसरा रन पूरा हुआ, आउट होते थे, बच गए। बहुत ही बेहतरीन ये समाप्ति 20 ओवर के बाद। जैसा कि हम आपको पिछले गेंद पर बता रहे थे कि आखिरी गेंद पर देखते हैं कितने बनते हैं। 3 रन बने और 178 पर 5 पर पारी समाप्त हुई। 20 ओवर के बाद 178 रन, लगभग 9 रन प्रति ओवर का रन रेट यहां पर बनाया है मैवरिक्स ने। पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था उनके लिए, उनके प्रतिद्वंदियों ने, जेबीसीएन एवेंजर्स ने
पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। मैवरिक्स स्कोर 178 पर 5 बेहतरीन स्कोर है 20 ओवरों में। 179 रनों का 179 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर 20 ओवरों में। और 10 मिनट बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ दूसरी पारी में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।
Hello all, we're back live with the second innings in this TSL, the Super League match between the Jbcn Avengers and the Mavericks. And this is the commentator Shalin Gupta welcoming all the viewers once again, and all the spectators who have come all the way from their respective locations to watch this match. So the second innings is about to start. And the left arm pacer Jfsc Tsl coming into bowl his first over. It's a good start by the pacer. Jfsc Tsl starts off well. He's a tall guy and generates a lot of pace. Has a short runner, but utilizes the strength of his shoulders and has a wonderful wrist as well while delivering the ball. And the opening batsman for Jbcn Avengers. Oh, and what a delivery! Josepha Tsl, the opening batsman, along with Rohan Dharia. And Josepha misses the second one as well. So 2 dots to start. Jfsc bowling a wonderful first over. That's a good start by him. Another good delivery and 3 in a row this time. Jfsc Tsl bowling a wonderful line. Just have a look at all those 3 deliveries. The line has been the same, just outside that off stump, and a very good length as well. So impeccable start by the left arm pacer. Oh, and this time it seems he's edged it, but the umpire not ready, not agreeing to the decision. Just have a look at that. Oh, and doesn't. Looks like this was an edge there. They were too confident. Don't know for what reason. Probably they must have felt some nick. Wasn't to be. That's a wonderful shot. Smashed for a boundary. What a shot that was. Josepha on fire. Brilliant shot. Just have a look at that. That was pitched up, and wow, what a shot that bludgeoned that. Josepha brilliantly played towards the covers for a boundary. The first one of this inning. And he opens the account. Josepha Tsl for himself as well as his team. Oh, another wonderful shot this time. Could be a big one. And that's a boundary, it seems. Oh, that's a 6. Wow. What a shot that is. Just have a look at that. Brilliantly played, and what a shot that was. Just have a look at the replay. Oh, and easily clearing the rope there. Huge 6 by Josepha. And that's the end of the first over. A very expensive start for Jfsc. 10 for no loss after bowling some really good deliveries, but last 2 deliveries spoiled the entire over. Josepha Tsl at his best. 2 wonderful shots.
Quick single taken by Rohan Dharia there. That's a good start by Rohan. His first delivery. Played that well and took a quick single. The mid-off did well there. Saurabh Joshi starts his first over and his spell as well. That's a good start by him. Josefa back on strike. And what a start by Josefa in the previous over. Wow. Saurabh coming to bowl his next delivery. Josefa on strike. Oh, and that's a good delivery. He missed that completely. Don't know why the keeper was appealing for an LBW there. There was no chance of that. Another good delivery by Saurabh. He's done well. 4 deliveries in just 2 runs he's given till now. This is his first over. Oh, and that's a wonderful shot in the air. Couple of bounces into the fence. Wonderfully played towards the deep extra cover region. Just have a look at that. Rohan Dharia this time coming into the act. That was pitched up, and what a shot that is. Played deliberately in with a wonderful execution as well. So this is really good batting by the Jbcn Avengers. They've started off really well. This is just the second over and the score is 16 without loss already. Saurabh has bowled well. Just 6 of this over till now by him. Oh, and that's a good slower delivery to end the over. 16 without loss after 2, and we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Saurabh bowled a good first over. Ashish coming into bowl his second over. 16 without loss after 2 overs, and on strike is Josefa again.
11 of just 8 deliveries. What a start by him. And that's a wide to start the over. Oh, and that's a good delivery. That's a good comeback by Ashish. Starts off with a wide and a good comeback by Ashish. In the air this time, played it deliberately towards the deep square leg. Should be a boundary, there's no fielder out there. And that's a wonderful piece of fielding there by the fielder. What a chase that was, just have a look at that. There was no fielder and all of a sudden the 4 was stopped by the chasing fielder. Just have a look at that, brilliant stuff there by the fielder. What a chase that was. That was a really good stop by the fielder, stopping a single for his team in the deep square leg region. That was played upish in the air deliberately by Josefa. Kunal stopped it at the deep square leg. What a stop that was by Kunal. What a chase that was by the fielder. Ashish coming to bowl his next delivery. On strike is Rohan. Oh, and he's appealing for an LBW and he's gone. What a delivery that was. Pitched in line and caught in front. Rohan Dharia, and that was such a wonderful piece of bowling. Just have a look at that. Oh, and yes, that was out. That hit the back leg. And why was he showing the bat there? Was trying to escape the dreaded finger of the umpire, but there was no chance of bat. That's a good decision by the umpire as well. That's a wonderful piece of bowling, and Ashish has struck for his team and he gets the breakthrough. Just have a look at that. Oh, and definitely out there. No chance for the batsman there, and that's the end of his innings. 20 for 1 in 2.3, and Jbcn Avengers have lost their first wicket. Mavericks have struck at the right time. We'll be back after a quick break. Stay tuned, viewers. And you've got the captain Rayad Merchant coming into the crease. And he'll be facing Ashish, who's bowling so well here. Taken the first wicket already. Oh, and starts off well with his first delivery to the batsman. And Rayad played it well. The run rate almost 9.5 at the moment.
Trying to take the quick single. This time he's gone. This is poor stuff. And they've lost a very important wicket there. Not a good piece of calling there by the batsman. Just have a look at that. Oh, and he was nowhere in the frame as well. That's a poor bit of calling there by both these players. We'll show you the replay once again. Josefa loses his wicket in a very soft way. That's the second wicket down in a span of 2 deliveries. Oh, and that was a poor bit of calling for sure. And Raid was quick for that single. Josefa was not ready, and that led to the second wicket. And 20-2 is the score now in just 2.5 overs. Just have a look at that. A very good piece of work there by the point fielder. No chance for the batsman to even think of getting into the crease at the right time. That's a good piece of bowling by Ashish as well. The kind of pressure is built in this over that has led to a run out as well, and lack of runs in this over probably forcing the batsman to take that single, take that call, and that was a wrong call as well. Ajay De Silva coming into bat. On strike would be Ajay, as Rayad had played that shot and it resulted into a run out at the keeper's end. Ashish has bowled good second over. This is second and third of the innings, and the current run rate is just over 7 runs and over. The required run rate almost 9.5. We had mentioned that previously as well. They need to do a lot of work here. 2 wickets have gone down, and both the openers now back into the pavilion. Oh, and that's a good delivery inside edge. Goes to the short third man. Single taken easily is off the mark straight away. Ajay De Silva, and that's the end of Ashish's very successful over. 2 wickets in that over, and the score after 3 overs is 21-2. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Saurabh Joshi coming into bowl is next over. That's a good shot played towards the long off. Could be a boundary, is a boundary, and Ajay De Silva plays a wonderful shot. This is his first boundary. That was a good shot played. So the over starts with the boundary. That's a good start by Jbcn Avengers in this over. A good comeback by Saurabh and a quick single taken. Oh, and a chance of a run out at the non-striker's end. But Ajay completes the single easily. Oh, and that's a wonderful piece of bowling, but a good shot played towards the deep square. There could be a couple here. Pratik Desai behind the ball, but couldn't prevent 2 runs. Rayad Merchant doing well there, and he's off the mark finally. Rayad on his 3rd delivery. The last time he tried to get off the mark resulted in a run out, so would be relief for Rayad as well.
That's a good delivery again. He's bringing the ball back into the right-hander very sharply. This is good bowling by Saurabh. Not getting the desired result till now, but still, he's bowled well in my opinion. Needs to be bowling within the stumps only. That's the way to bowl the new ball, and especially if you're bringing the ball back into the right-handers, which is doing quite well. Another good delivery by Saurabh. And a quick single. Again, no, they decide against it. That was a good decision. That's the end of the fourth over. The score is 29 for 2 after 4. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. We've got Umang bowling his first over. Starts over with a wide. Not a good start by him. 30 for 2 after 4 overs now. Rayad on strike. The captain of the Jbcn Avengers needs to play a big innings here. The captain's knock. He has the capability for sure. It's just that he will have to wait for the loose deliveries to hit his shots. Oh, and that's a wonderful shot on the back foot. Straight to the fielder, though no run taken. That was a good stop by the fielder as well at the covers. Another good shot and straight to the fielder once again. Two deliveries and two similar shots going to the same fielder. Played it deliberately in the air. Over the covers region. Will be a boundary. Oh, and what a stop that is by the fielder. Stop certain 2 runs there. Was a short shot boundary, but what a brilliant piece of work. That was a wide delivery. Asking to be hit, and oh, and he was almost there with the catch. Just over his stretched arm. Oh, and that was a wonderful piece of work there by the sweeper cover fielders. Ran all the way from the sweeper cover and stopped a certain boundary. Restricted them to only a couple. Wonderful piece of fielding there. Coming into bowl is next Umang. Another wide delivery and played well, but straight to the fielder again, and a quick single taken this time. Could have been a wide.
In the air. Played deliberately. Could be a boundary there. There's a fielder out there, but probably the ball will win the race, and that does. It did win the race there, the ball. That was a good shot by Jfsc Tsl. Just have a look at that. Played deliberately towards the sweeper cover region. And the covers fielder tried his level best, running all the way from the deep cover boundary to the sweeper cover, but couldn't stop the boundary. That's a wonderful shot by Jfsc Tsl. He's raised to 10 of just 6 deliveries, and just one more delivery left in this over. Umang has bowled over with a lot of balls outside the off stump, asking the batsman to hit them. Just one delivery remaining. Oh, and that's a good shot again this time, but straight to the fielder. He misses that. Could be a couple there. Would be a easy single only. That's the end of Umang's first over, and the fifth over has been bowled 38 for 2. The mid-on misfielding that and allowing the single to happen. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Neeraj coming into bowl his first over. That's a good start by Ajay. Takes a single, playing it towards the mid-on. Oh, and that's a good delivery by Neeraj. Missed that completely. Rayad. And it did bounce as well, quite a lot. The length was the key here. Pitched in the right length. In the air this time, will that be a chance of a catch? It seems no. Running towards the boundary will be a boundary. Good try by the mid-on fielder, running backwards towards the long on boundary, but no chance for him. That was a good shot in the end by Rayad Merchant, the captain. Takes a boundary on that. Let's have a look at the replay. No chance for the fielder at mid-on. That was way behind him. That's a good boundary scored by the captain of Jbcn Avengers. Another wonderful shot, but straight to the fielder. Just a single there. The long off does well. That's a good delivery. No run taken that time, just a dot delivery. Good bowling by Neeraj there. Oh, and this time appealing for a caught behind there, but probably kissing the pads. Let's have a look at the replay there. That was really close, and what a wonderful take by the keeper. Just have a look at that. Oh, and that was really close. Probably
taking the pad, but we're not sure from here. But the umpire says no to a caught behind appeal, and that's the end of the 6th over. The score is 44 for 2. We'll take a quick break and be back soon with the Hindi commentary now. Stay tuned, viewers. स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं हम। 6 ओवर में 44 का स्कोर हो गया है जेबीसीएन एवेंजर्स का, और एक बड़ी पारी की उम्मीद यहाँ पर कप्तान रायत मर्चेंट से। बेहतरीन खिलाड़ी हैं अजय डिसिल्वा भी उनका बेहतरीन साथ देते हुए 12 रन पर खेल रहे हैं 10 गेंदों के बाद। रायत 11 पर 11। उमंग की अच्छी शुरुआत इस ओवर की। पहली गेंद पर सीधा शॉट खेला राहुल केसवानी के हाथ में, एक भी रन नहीं। एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में बढ़िया क्षेत्र रक्षण। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, 4 रन। ऊपर की गेंद और क्या जबरदस्त प्रहार किया यहां पर। जबरदस्त प्रहार, एक टप्पा खाकर पॉइंट के ऊपर से खेला 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट ये रायत का। और एक बार फिर से हवा में खेला हुआ शॉट, क्या ये बड़ा शॉट है, लेकिन बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहां पर। लेकिन 2 रन तो फिर भी मिल जाएंगे। ऑस्टम के बहुत बाहर डाल रहे हैं ये। आगे की गेंदें पूरा मौका दे रहे हैं हाथ खोलने का, और अगर आपको इस तरह की गेंदबाजी करनी है तो आपको फिर क्षेत्र रक्षक वहां पर लेने चाहिए। गेंदबाजी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन आपको क्षेत्र रक्षक जहां पर है उसके हिसाब से गेंदबाजी करनी चाहिए। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी, तारीफ करनी होगी। 4 गेंदों पर 6 रन, 50 रन पूरे हो चुके हैं उस पिछले हवाई शॉट के चलते। उमंग आए हैं अपनी 5वीं गेंद डालने इस दूसरे ओवर की। उनका स्पेल अभी तक कुछ खास नहीं गया है। विकेट लेंगे तो बढ़िया शॉट, छोटी गेंद पे बेहतरीन यहां पर प्रहार, और एक ही रन लिया, 2 ले सकते थे अगर पहला तेजी से भागते तो। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर। हवा में खेला हुआ शॉट, और बढ़िया शॉट था, लॉन्ग ऑन से दूर खेला, लेकिन एक ही रन मिला। अगली गेंद लेकर आते हुए उमंग, ऊपर की गेंद, बेहतरीन गेंद। बड़ा शॉट खेलना का प्रयास अजय का, लेकिन चूक गए और
ओवर की समाप्ति हुई यहाँ पर। उमंग का दूसरा ओवर समाप्त। 7 ओवर के बाद 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। कुणाल बुबा को आक्रमण में लाया गया है। स्ट्राइक पर रायद। बढ़िया शुरुआत रायद के सामने कुणाल की। एक भी रन नहीं पहली गेंद पर। डॉट गेंद। स्पेल की शुरुआत की है कुणाल ने और क्या यहाँ पर विकेट ले पाएंगे और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे एक गेंदबाज के तौर पर। ये देखना है। बहुत बेहतरीन गेंदबाज है कुणाल। छोटी गेंद। बढ़िया शॉट लेकिन स्वीपर कवर पर। बढ़िया क्षेत्र रक्षण। एक ही रन दिया। और ये खराब शॉट। क्लीन बॉल। बहुत ही लचर बल्लेबाजी है। फुल टॉस पर चूक गए यहां पर और उसे यॉर्कर लेंथ ब्लॉक होल की गेंद बना लिया। ये देखिए पूरी तरह चूके इस फुल टॉस गेंद पर। खड़े खड़े और वो भी लेग स्टंप के बाहर गए थे, इसलिए सीधे बल्ले से खेलने की जरूरत थी यहां पर। और एक बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ कुणाल भुवा ने आते ही एक विकेट चटका दिया है। आपको फिर से रिप्ले दिखाएंगे। ये देखिए यहां पर लेग स्टंप के बाहर खड़े थे और इसको आप सीधे बल्ले से खेलते अगर तो ये हश्र नहीं होता, लेकिन ऑन साइड की तरफ मारने का प्रयास, जबकि अक्रॉस द लाइन खेलना यहां पर बनता नहीं था और विकेट गंवा बैठे अजय डिसिल्वा। बेहतरीन गेंदबाजी कुणाल के द्वारा। तीसरा विकेट गिरता हुआ। कुणाल का पहला विकेट अपनी सिर्फ तीसरी गेंद पर। अभी तो स्पेल शुरू किया था उन्होंने और क्या शुरुआत दी है, तारीफ करनी होगी। और 52 पर 3। एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। वसीम रश्कारिया आए हैं नए बल्लेबाज। स्ट्राइक लेंगे और कुणाल की अगली गेंद। बढ़िया शुरुआत। क्या बेहतरीन फ्लाइट दे रहे हैं यहाँ पर। आमंत्रित कर रहे हैं बड़ा शॉट खेलने के लिए और वसीम ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की। आसानी से खेला उसे। पहली गेंद थी इसलिए। बढ़िया शॉट यहाँ पर वसीम का। 1 रन लिया आसानी से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलकर और अपना खाता खोला तीसरी गेंद पर।
ओवर की समाप्ति यहाँ पर बेहतरीन ओवर कुणाल भुवा के द्वारा, सिर्फ 2 रन दिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट झटका। आठ ओवर के बाद 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। यश वोरा को आक्रमण में लाया गया है, उनका पहला ओवर स्पेल का, लेग स्पिनर है, बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद पर लगभग आउट कर दिया था यहां पर वसीम लश्कारिया को। अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर से। बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाजी है यशोरा के द्वारा, फ्लाइट दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं बड़ा शॉट खेलने का। वसीम लश्कारिया बहुत ही संयम से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रन रेट अभी सिर्फ 6.24 का है, तो रिक्वायर्ड रन रेट 10.5 के ऊपर पहुंच गया है। बड़े शॉट्स खेलने का समय आ ही चुका है लगभग। बढ़िया शॉट खेला स्वीपर कवर के क्षेत्र में, क्या है दूसरे के लिए वापस आएंगे? जी हाँ आएंगे। और बेहतरीन यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आसानी से 2 रन पूरे किए। बढ़िया गेंदबाजी, एक और अच्छी गेंद। और एक ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं यशोरा ने अपने स्पेल के पहले ओवर में। 9 ओवर के बाद स्कोर 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी और 1 रन से ओवर समाप्त हुआ। एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। कुणाल भुवा आए अपना अगला ओवर लेकर, बढ़िया शॉट यहाँ पर वसीम का, हालांकि स्वीपर कवर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। हवा में खेला हुआ शॉट, बेहतरीन शॉट, और क्या ये छक्का है? 4 रन है। जबरदस्त प्रहार यहां पर कप्तान रायत का एक बार फिर से, और कप्तानी पारी यहां पर आज देखने को मिल सकती है। ऊपर की गेंद और बढ़िया शॉट खेला। जी हां, लॉन्ग ऑफ से दूर खेला यह शॉट 4 रन के लिए। बहुत बेहतरीन प्रहार रायत का।
और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर ने धराशायी कर दिए स्टंप्स, और स्टंपिंग की अपील भी की, लेकिन स्टंप्स तो दूर जाके गिरे हैं, लेकिन बल्लेबाज वहीं पर है और वहीं रहेगा अभी। नॉट आउट का इशारा अंपायर का। बढ़िया गेंदबाजी कुणाल की, बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया था, इस बार आमंत्रित किया था, लेकिन रायत को ये शॉट डीप मिड विकेट की जगह स्वीपर कवर्स की तरफ खेलनी चाहिए थी, या पॉइंट के ऊपर से बड़ा शॉट खेल सकते थे यहाँ पर। बेहतरीन प्रहार, यहां पर 6 रन मिलेंगे ऐसा लग रहा है। बड़ा छक्का है ये रायत मर्चेंट का, जबरदस्त यहां पर कप्तानी पारी देखने को मिल रही है रायत के बल्ले से। बेहतरीन शॉट और अच्छी गेंद को भी इन्होंने सीमा रेखा के पार पहुंचाया। जबरदस्त हरफनमौला खिलाड़ी रायत मर्चेंट, क्या शॉट लगाया है 6 रन के लिए। जी और इनकी तारीफ करना लाजमी है, यहां पर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं आसान नहीं है रन रेट को ऊपर लाना, खास करके इतनी बढ़िया स्पिन गेंदबाजी हो रही है। खराब गेंद, और इसको इस बार फिर से खेला गैप में, लेकिन एक ही रन होगा। उसके बावजूद रायत डटे हुए हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 30 पर आ गए हैं सिर्फ 22 गेंदों के बाद। बेहतरीन पारी रायत की अभी तक। ज़बरदस्त टेम्परामेंट के धनी है रायत मर्चेंट। उन्हें पता है कि उन्हें अंत तक रुकना पड़ेगा अगर मैच में अपने दल की वापसी करनी है। जेबीसीएन एवेंजर्स 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी बहुत कुछ बाकी है इस मैच में। 179 रनों का टारगेट है और ये दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं तेजी से। क्या यहाँ पर रनआउट का मौका बनेगा? बच गए यहाँ पर रायत। वसीम और रायत की अच्छी गेंदबाज, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, माफ कीजिएगा। और यहाँ पर 10 ओवर के बाद स्कोर 70 पर थी, तो लगभग बराबर का ही स्कोर है। 73 रन स्कोर था जब मैवरिक्स बल्लेबाजी कर रहे थे, और यहाँ पर जेबीसीएन एवेंजर्स ने 17 रन बना लिए 10 ओवरों में। 10 ओवर में 70 पर 3। और ड्रिंक्स ब्रेक का निर्देश अंपायरों का। एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।
ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार वापस आपका स्वागत करते हैं। यश वोरा आए हैं, बढ़िया शॉट रायत का, 1 रन मिलेगा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलकर। राहुल की बढ़िया फील्डिंग, अच्छा क्षेत्र रक्षण। वाइड गेंद, तेज डालने का प्रयास यहां पर, वाइड गेंद, अतिरिक्त रन दिया यहां पर यश ने और एक गेंद भी डालनी पड़ेगी। स्ट्राइक पर वसीम लश्कारिया। दोनों बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इनकी साझेदारियां भी अच्छी हुई हैं। खास करके वसीम तो मध्य क्रम के बहुत ही सुदृढ़ बल्लेबाज हैं, सशक्त बल्लेबाज हैं। और इस बार यहां पर चूक गए, छोटी गेंद थी और बच गए यहाँ पर यश वोरा। जी हाँ, देखिए इसलिए शायद धन्यवाद दे रहे हैं अपनी किस्मत को। बड़ा शॉट लग सकता था इस गेंद पर, खुश भी नहीं है अपने आप से क्योंकि लंबाई बहुत छोटी थी उस गेंद की। बच गए कि बड़ा शॉट नहीं मार पाए वसीम, चूक गए वसीम उस गेंद पर। बेहतरीन शॉट, ऊपर की गेंद और जबरदस्त शॉट। क्या यहाँ पर चौका मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पर एक क्षेत्र रक्षक है। 2 रन के लिए वापस आ गए। क्या रनिंग करते हैं दोनों, तारीफ करनी होगी। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अगली गेंद लेकर आते हुए बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट और 2 टप्पे के बाद 4 रन एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। जबरदस्त प्रहार यहां पर, तारीफ करनी होगी यहां पर वसीम की। और ये बेहतरीन पुल शॉट, और क्या रोका है, वाह, तारीफ करनी होगी। सिर्फ 1 रन, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण, बहुत ही बेहतरीन। ओवर की समाप्ति यहां पर 11 ओवर के बाद 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए छोटी गेंद थी और डीप स्क्वायर लेग में पुल किया और क्या जबरदस्त क्षेत्र रक्षण, वाह, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। गौरव का जबरदस्त क्षेत्र रक्षण वहां पर, तारीफ करनी होगी। पर फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे गौरव ने किस तरह से रोका उसे। लगभग चौका हो जाता लेकिन क्या रोका है, वाह। इस तरह के अगर आप प्रयास करेंगे क्षेत्र रक्षण में तो पूरी टीम, पूरे दल का मनोबल बढ़ेगा। और ये ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रतीक देसाई आए अपना पहला ओवर लेकर और ये खराब गेंद से शुरुआत। क्या यहां पर चौका मिलेगा? ऐसा लग तो रहा है कि 4 चला जाएगा। जी हां, 4 रन पहली गेंद पर। वसीम लश्कारिया का बेहतरीन शॉट, खराब गेंदबाजी, देखिए लेग स्टंप के बाहर ये गेंद और बहुत ही बढ़िया शॉट, कलाइयों का हल्का सा प्रयोग और 4 रन के लिए इस गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। और अब फासला 100 रन से भी कम का, 82 पर 3 हो गया स्कोर। सिर्फ 97 रन चाहिए और 8.5 ओवर बचे हैं। रिक्वायर्ड 100 अभी भी
लगभग 11 का है, लेकिन 11 का रन रेट तो बन सकता है अगर ये दोनों खड़े रहें तो। प्रतीक की खराब शुरुआत उनके स्पेल की, पहली गेंद पर चौका खा गए। अब देखते हैं कैसे वापसी करेंगे। बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन वापसी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास वसीम का, और सोच भी सही थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पर प्रतीक की। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद उछाल लेती हुई, और एक भी रन नहीं। एक बार फिर से अच्छी गेंद और एक भी रन नहीं इस बार। पॉइंट पर बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, और ये बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। वापसी पिछली 2 गेंदों पर बेहतरीन हुई है प्रतीक के द्वारा, एक भी रन नहीं दिया है। अगली गेंद लेकर आते हुए प्रतीक, बढ़िया गेंदबाजी। एक बार, इस बार 1 रन मिलेगा। एक्स्ट्रा कवर्स पर खेलकर 1 रन लिया तेजी से भागकर। इस बार स्वीपर कवर की तरफ खेला, 1 रन। बेहतरीन गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति 12 ओवर के बाद 84 रन, 7 रन प्रति ओवर का रन रेट है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। We're back live. This is the 13th over starting, and that's a good shot played. And they're coming back for the second. No, they decide against it. 85 for 3 in 12.1. Jbcn Avengers are going in the right direction to chase the score of 179. Alok Gupta has started his spell nicely with the first ball within the stumps, and that was a good delivery, a single only. Oh, he's cleaned him up. What has he done? Absolute disaster here. Wasim Lashkaria, what was he trying to do there? Alok Gupta strikes brilliantly. Just have a look at that. He was trying to leave that delivery, and the leg stump gone there. And just have a look at the wicket keeper. He just cannot believe that. Alok Gupta strikes brilliantly, and Wasim Lashkaria, big blunder.
there by the batsman in judging the line of the delivery. Loses his leg stump, and a very important wicket in the context of this game. We'll show you the replay once again. Probably one of the most strangest dismissals that we've seen in the entire season here. Just have a look at that once again. That was pitched within the stumps, and we had just mentioned that he's pitching it within the stumps. Just have a look at that. He's trying to leave that, and probably it swung slightly. Takes the leg stump on its way, and what a delivery by Alok. He would be a happy man, and Wasim would be a shocked man for sure. He's not a kind of batsman to leave his wicket and lose it like the way he did today. And that's the end of a good innings by Wasim Lashkaria. A wonderful hand played by him. 19 runs he contributed, but the kind of dismissal it was, that was a shocking one. Just have a look at that once again. That was really poor judgment by the batsman. Oh, and that is such a delight for the bowler, for sure. The best thing about that dismissal was the wicket-keeper's reaction. He was also just not able to believe what happened there. And the new batsman on strike now. Alok coming in with his next delivery. Trying to hit the big shot right from the word go, and a single taken easily. Gets off the mark. Hayden. 86 for 4. 12.3. And that was such an important wicket in the context of the game. Wasim Lashkaria back into the pavilion, out of the equation. Need to do a lot of work here now. Rayad Merchant, the captain of the Jbcn Avengers. That's a good delivery again, and Rayad beaten all ends up there. Alok Gupta is bowling a wonderful first over. Another good delivery, and Alok coming with his next. In the air! That's a wonderful shot. Will that be a boundary? It is a boundary. Rayad Merchant playing a wonderful knock here. Just have a look at that. That was pitched up and playing it on the up. What a shot that was, and no chance for the fielder at long off. It is straight down the ground for a boundary, and that's the end of a good over by Alok. Just 6 of the over, and a very important wicket of Wasim Lashkaria. And the score after 13 is 90 for 4. We'll be taking a quick break again, and we'll be back soon. Stay tuned, viewers. Pratik Desai starting a brilliant second over. Starts off really well with that Yorker length delivery. Almost getting rid of the batsman there, but this is really good stuff by the bowlers from the Mavericks team.
nice delivery in the block hole and could not connect that. Hayden. The coming into bowl is next. This is his second over and the 14th of the innings. Another good delivery, but could have been some runs here. He missed the trick there. Hayden for sure. That was a full toss and he missed that completely. Just have a look at that previous delivery. Almost getting the leg stump. Pratik Desai bowling a really good over. 2 dots in a row is gold at the moment. Every ball counts. Just have a look at the required run rate, 13.35. The current run rate only 6.75. Rayad Merchant is the only batsman who has shown some resistance here today. Oh, and that's a big one. What a shot that is. Oh, and he's dropped it. Is that a boundary? It is a boundary. Could have been a catch here, but just have a look at that. That was in the slot and Hayden gave it all. But that was straight into the hands of the fielder and he drops a really important catch here. .94 for 4. So 3 deliveries and 4 runs scored in this over. Pratik with his next delivery. Oh, and this time it seems it will be a big one. That's a huge hit. Wow. What a shot by Hayden. And no wonder his name is Hayden. He's reminded us of Matthew Hayden here. What a biggie that was. The right-handed Matthew Hayden. Pratik Desai being dealt with severely here by the batsman. A huge hit towards the deep square leg for a 6. What a shot that was. And that's the 100 up with that huge 6. Monstrous hit for sure. You can't set a field for those shots. The kind of batsman he is. Becomes really tough for anyone to set a field. Just have a look at the previous one where he was trying to hit a big 6. Was into the hands of the fielder but dropped it. What a shot that was. A monstrous 6 there on the top of the roof beyond the deep square leg boundary. Couldn't have been a big hit than this one. Oh, and that's a good comeback, but Hayden also kind of stopping himself to not get enticed and carried away with the occasion. 100 is up, just 79 to win now. 6.1 overs is what they have to do that. Pratik coming to bowl the last delivery of his second over. Oh, and this time in the air. Is that a big one? Or is that a catch? And that's a drop catch. That was not an easy one for sure. They take the couple. And he's coming back for the third as well, it seems. Rayad Merchant. Really well there. Let's have a look at that. Oh, and these catches are really tough when they come under the light. Not at all an easy shot to hold as a catch. And 8 runs of that over. 102 for 4 after 14, and Hayden has played really well. 12 runs of that over, I beg your pardon there. He's played his part in that over brilliantly. Let me show you that big one that he hit. This was the next delivery after the 6. Bring you the 6 as well. Just have a look at that 6. What a shot that was in the previous over. A huge hit. Monstrous that was. This was the one which was the drop catch. We'll show you the 6 again.
So 77 required of 36 deliveries now. Alok coming into bowlers next over, starts off with a good delivery, but that's a wide. Oh, that is a well played shot in the air. Oh, and that seems to be a 6. That's a 6. Wow. Brilliant batting this by Ryan. Just have a look at that on the up. What a shot that was towards the covers. That was a 6 by Ryan. Amazing batting this is by him. Another good shot this time, but there's a fielder out there. Just a single. The sweeper does well this time. Just a single, and the score is 108 for 4 after 14.2. And the previous one was a boundary, not a 6. Just correcting there the umpire. So 6 runs already of this over. Coming into ball is next delivery, and this should be a boundary. That's a wonderful shot. No chance for any fielder. That was hit really hard and takes the thick edge of the bat, and that's a safe shot for sure, and a very effective one as well. So Hayden on fire now. He's scoring some really important runs. 17 of just 8 deliveries. What an important knock by Hayden till now. Wonderfully played. Coming to bowl is next delivery, Alok. Oh, and this time Hayden missing it completely. Coming into bowlers next delivery. It has been an expensive over by Alok. 10 already of this over. That's a good delivery. Just a single this time. The long off doing well there. Oh, and this time bowled really well again, Alok. छोड़ दो. So 15 overs have been bowled, 113 for 4. And Alok ends the over nicely with a dot, and last 5 overs and 66 to win. Definitely possible if both these players stay till the end. Ashish Reddish coming to bowl his third over. He's bowled really well in his first spell.
That's good captaincy as well. 2 overs remaining for Ashish. Rahul Keswani is the captain of Mavericks, doing the right thing here. Just have a look at that monster set that we were mentioning about. What a shot that was. And finally we are able to bring the replay for you all. What a shot that was. Huge hit on the top roof beyond the deep square leg boundary. And now coming back live here, Ashish Reddish bowling his 3rd over. This is the 16th. Oh, and that's a wonderful piece of bowling. And the keeper appealing for a caught behind, but the umpire not interested. Hayden misses that. He's trying to hit the big one, not succeeding. Ryan Merchant 42 of 31. What a knock here by the captain. Oh, and this time edged in boundary again. These are really important runs for Hayden and the team. That was not at all a poor delivery, but just have a look at that. The luck favouring the batsman this time, trying to pull it towards the onside, but getting a thick outside edge for a boundary. There's no fielder out there to stop that. Wonderful piece of batting there by Hayden. Ashish Reddish bowling a good over, but still going for runs till now. Just 2 deliveries he's bowled and gone for 4 runs. So that's a good start by Hayden to this over. And the current run rate rising to 7.63. And the left arm pacer coming into bowl his next delivery. Hayden is playing a very important knock here. 22 of just 12 deliveries. Ryan Merchant 42 of 31. Ashish with his next delivery. That's a good shot played and Ashish does really well. A dot delivery here. Wonderful piece of bowling and fielding on his own bowling by Ashish. "27 balls and 62 runs. Ashish with his next. Oh, and that seems to be a big one by Hayden. That's a huge 6. Wow, what a player this guy is. A huge 6 in the slot, and he doesn't mind hitting it out of the park once again. He's on fire, this guy. 28 of just 13 deliveries. What a player Hayden is, and what important knock he's playing today for his team and his captain, who's standing at the non-strikers end and admiring the big hitting capabilities of Hayden. That was a monstrous hit again, and Ashish Reddish is not an easy bowler to hit such big shots, but look at the confidence with which Hayden is hitting. Currently 28 of 14, strike rate of 200. What a player, and what great batting this is. Oh, and this time trying to hit the big one again, but Ashish just hitting the right length. We'll show you the replay of the previous delivery. Just have a look at that. That was a big one in the slot, and he doesn't mind freeing his arms. Just 10 of that over. Last delivery of his over. Still not bad an over in terms of the run rate required. This delivery is really crucial and bowled really well by Ashish. So ending with just 10 runs in that over. That's a wonderful piece of bowling by Ashish. The score 123 for 4 after 16. And we'll take a quick commercial break and be back soon with the Hindi commentary now till the end of this inning. Stay tuned, viewers. This match is getting interesting with every over.
सौरभ जोशी आए हैं अपना अगला ओवर लेकर, हवा में खेला हुआ शॉट, और क्या ये चौका होगा? जी नहीं, एक ही रन। तेईस गेंदों पर 55 रन चाहिए। बहुत ही बेहतरीन मैच हो रहा है यहाँ पर। रायत मर्चेंट डटे हुए हैं क्रीज पर, कप्तानी पारी खेल रहे हैं, और हेडन की तारीफ करनी होगी। ताबड़तोड़ आतिशी पारी अभी तक। 17वां ओवर सौरभ जोशी का। बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा शॉट है, और ये शायद चौका ही है, पर देखना पड़ेगा। जी हाँ, ये चौका है, आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन यहाँ पर कैमरा वर्क हमारे कैमरामैन। जी हाँ, अंपायर ने अपना निर्णय बदला और 4 रन दिए। यहाँ पर चौका ही था, रिप्ले में साफ दिखाई दे रहा है। और इस बार बेहतरीन शॉट, और एक और चौका। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर, और सौरभ जोशी का ये ओवर बहुत महंगा साबित होता हुआ। जी हाँ, ये ऊपर की गेंदें डालेंगे तो हेडन यही हश्र करने वाले हैं। और एक बार फिर से आपको दिखाएंगे पिछली गेंद पर कैसे 4 रन मिले। जी हाँ, चौका ही था ये। 2 गेंदों पर 2 चौके, और बेहतरीन बल्लेबाजी हेडन के बल्ले से यहां पर आतिशी पारी निकलती हुई 36 पर आ गए हैं। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। नौ रन बन चुके हैं 3 गेंदों पर, और 16.3 ओवरों में 132 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है हर गेंद के साथ, और हेडन की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। 36 पर आ गए हैं सिर्फ 16 गेंदों के बाद, 17 गेंदों के बाद, माफ कीजिएगा। जी हाँ, 18 गेंदों के बाद थे, और अब 19 हो गए। अच्छी वापसी यहाँ पर सौरभ जोशी की। 19 पर 36। हेडन क्या एक बड़ा शॉट और खेलेंगे? 9 रन तो बन ही चुके हैं इस ओवर में। एक बड़ा छक्का लगाएंगे तो 15 हो जाएंगे। और ये बड़ा शॉट मारने का प्रयास, क्या ये सफल प्रयास है? और ये अच्छा क्षेत्र रक्षण, सिर्फ एक ही रन। 20 पर 47, बहुत। ये देखिए पिछली गेंद पर क्या चौका लगाया था हेडन ने। और ये आखिरी गेंद इस 17वें ओवर की। डेथ ओवर्स में प्रवेश कर चुके हैं इस दूसरी पारी में हम सब। इसके बाद सिर्फ 3 ओवर बचे हैं। 47 रनों की अभी भी दरकार है। बेहतरीन शॉट, और सिर्फ 1 रन। ओवर की समाप्ति। सत्रह ओवर में 134 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 45 रन चाहिए 3 ओवरों में। 15 रन प्रति ओवर, और जब तक ये दोनों हैं तब तक 15 रन प्रति ओवर बन सकते हैं। अभी भी रायद और हेडन इस कारनामे को कर सकते हैं, लेकिन प्रतीक देसाई बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी, अनुभवी गेंदबाज, उनको बुलाया गया है। अब देखना है कि क्या 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब बल्लेबाजी कर पाते हैं रायद और हेडन। रायद को बड़ा शॉट खेलना होगा। 44 पर खेल रहे हैं 33 गेंदों पर, और अगर छक्का मारेंगे तो 50 रन वापस पूरे करेंगे। बढ़िया शॉट, एक ही रन।
प्रतीक की अगली गेंद हेडन को, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, और आसानी से 2 रन मिलने चाहिए। अंदरूनी किनारा लगाया और किस्मत एक बार फिर से हेडन के साथ, 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। बेहतरीन गेंदबाजी प्रतीक की, डॉट गेंद इस समय सोने से कम नहीं है। जी हाँ, खरा सोना है ये डॉट गेंद। और हेडन जैसे बल्लेबाज को डॉट निकाला तो वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जिस तरह के बल्लेबाजी कर रहे हैं हेडन, 39 सिर्फ 21 गेंदों पर, आप देख सकते हैं क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का यहाँ पर नज़ारा दिखाया हेडन ने। सिर्फ 15 गेंदें बची हैं और अभी भी 42 रनों की आवश्यकता इस मैच को अपने कब्जे में करने के लिए। बन सकते हैं, 15 पे 42 बनते हैं, लेकिन ऐसी गेंदबाजी हो तो कैसे बनेंगे। ज़बरदस्त गेंदबाजी प्रतीक के द्वारा, और शायद बीच में हाथ लगाया रोकने के लिए और चोट खा गए हैं थोड़ी सी। हेडन के शॉट्स में दम ही इतना है, ताकत ही इतनी है कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 4 रन दिए हैं देखिए सिर्फ 4 गेंदों पर। 18वें ओवर में अगर आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो आप खरे सोने से कम नहीं है अपने कप्तान के लिए। राहुल केसवानी की तारीफ करनी होगी यहाँ पर, बेहतरीन कप्तानी और अच्छे गेंदबाजों के ओवर बचा के रखे हुए हैं आखिरी गेंदों के लिए। रायद मर्चेंट स्ट्राइक पर 45 पर खेल रहे हैं, बड़ा शॉट चाहिए होगा यहाँ पर, इसी शॉट पर 50 पूरे करने होंगे। बेहतरीन शॉट, लेकिन 1 ही रन, स्वीपर है वहां पर, 1 ही रन मिलेगा। बढ़िया शॉट था, लेकिन बड़ा शॉट खेलना है, सीमा रेखा के पार पहुंचाना है। दोनों बल्लेबाज 40 में खेल रहे हैं, 46 पर रायद मर्चेंट और 40 पर हेडन। और अगर 80 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने योगदान दिए हैं तो ये मैच जिताना भी उन्हें ही चाहिए। ज़्यादा गेंदें नहीं बची हैं, सिर्फ 13 गेंदें बची हैं। यहाँ पर तारीफ करनी होगी प्रतीक देसाई की, 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन। ये इनका तीसरा ओवर है, मतलब 1 ओवर और भी कराएंगे, ये आखिरी ओवर जो होगा इस पारी का, ये 18वां ओवर चलता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा शॉट है, लेकिन शायद 1 ही रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए आना चाह रहे हैं लेकिन आएंगे नहीं। बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, और क्या ओवर कराया, सिर्फ 6 रन, वाह। ओवर की समाप्ति 140 पर 4, 18 ओवर में 2 ओवर में चाहिए अब 39 रन, 19.5 का रन रेट प्रति ओवर, और बहुत ही मुश्किल काम है ये। लग तो नहीं रहा है कि बन पाएंगे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हालांकि जब तक हेडन और रायद हैं बड़े छक्के लग सकते हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ 5 छक्के चाहिए उन्हें 12 गेंदों पर, और ये मैच वापस उनके कब्जे में आ सकता है। और 5 छक्के लगाना तो हेडन के बस में है, सक्षम है हेडन और रायद दोनों। 12 गेंदों पर 5 छक्के, आसान नहीं है, लेकिन अगर ठान लें तो मुश्किलों का सामना करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा और अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। बढ़िया गेंदबाजी है आशीष के द्वारा, उनका आखिरी ओवर, बेहतरीन शुरुआत 19वें ओवर की। 1 ही रन मिला, और 1 रन से कुछ होना नहीं है यहाँ पर, बड़े शॉट्स ही चाहिए सीमा रेखा के पार जो जाएं।
बेहतरीन शॉट इस बार, एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में खिला, एक ही रन, दूसरे के लिए आना चाह रहे हैं, जी नहीं। और यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी आशीष के द्वारा। दस गेंदों पर 37 रनों की आवश्यकता। और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और ये 4 रन। जी हां, ये भारी किनारा लगकर फिर से गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं ऊपर की गेंद थी ये, बेहतरीन गेंदबाजी ये, हालांकि चौका खा गए इस पे भी। एवेंजर्स को तो कुछ भी चलेगा इस समय, कैसे भी आए रन। उनके लिए प्रसन्नता का ये विषय होगा कि एक और चौका लग गया है। 9 गेंदों पर 33 रन चाहिए, बहुत ही कम अंतर बचा हुआ है। छक्के ही लगाने पड़ेंगे इस मैच को जीतना है तो। 9 पर 33, इस ओवर में अगर 13-14 रन और बनाते हैं 3 गेंदों पर, तो अगले ओवर में भी शायद कुछ मौका लगेगा। और ये अच्छी गेंदबाजी, ऐसी गेंदबाजी के विरुद्ध ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाना तो बहुत मुश्किल है। आशीष की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। दो गेंदें बची इस ओवर में। अब देखना है कि रायत मर्चेंट क्या इसी ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हैं क्या? प्रयास तो कर ही रहे हैं, लग नहीं रहे हैं लेकिन बड़े शॉट। इस बार लगता है कुछ होगा, और ये कैच छोड़ा, यहां पर कैच छोड़ दिया। रायत की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन खराब क्षेत्ररक्षण डीप एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में। देखिए आसान सा कैच छोड़ा यहां पर कप्तान राहुल केसवानी ने। इस तरह के कैचेस नहीं छोड़ सकते आप अगर मैच बहुत रोमांचक स्थिति में है। हालांकि अभी पकड़ मैवरिक्स की बनी हुई है इस मैच में, और हेडन के ऊपर बहुत कुछ यहाँ पर दारोमदार है। 47 पर खेल रहे हैं 27 गेंदों के बाद सिर्फ, लेकिन पिछले कुछ ओवरों में बहुत बड़े शॉट्स नहीं लगा पाए हैं जो पहले शुरुआती पारी में उन्होंने लगाए थे अपने। और बेहतरीन गेंदबाजी भी हुई। देखिए एक और यॉर्कर, एक ही रन मिलेगा। क्या दूसरे के लिए आएंगे? जी हाँ, आ रहे हैं। और यहां पर रनआउट का एक मौका, और चूक गए यहां पर विकेट कीपर। ओवर की समाप्ति, यहां पर 2 रन मिल गए और 150 रन स्कोर हो गया है 19 ओवर के बाद। विकेट कीपर की भारी चूक हुई यहां पर, आसानी से रनआउट कर सकते थे, लेकिन गेंद स्टंप्स को मारते समय हाथ से निकल गई उनके। 150 रन पूरे कर लिए, लेकिन 29 रन अभी चाहिए सिर्फ 6 गेंदों पर, जो कि लगभग नहीं बनते हैं अगर आप युवराज सिंह जैसा कुछ ना करें जैसा उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में किया था। रायत को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। स्ट्राइक पर है वो, 6 गेंदों पर 29 रन चाहिए। प्रतीक देसाई गेंदबाजी करने आ रहे हैं, और ये मैच लगभग मैवरिक्स की पकड़ में आ चुका है पूरी तरह, और अब मात्र एक औपचारिकता ही बची हुई है ऐसा लग रहा है। लेकिन रायत मर्चेंट अगर कुछ करिश्माई अद्भुत बल्लेबाजी करेंगे तो शायद ये मैच JBCN एवेंजर्स जीत पाएंगे, वरना तो इस मैच में एक ही विजेता दिख रहा है, और वो है मैवरिक्स। बेहतरीन शॉट, चौका मिलना चाहिए यहाँ। जी नहीं, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण भी, बहुत ही उच्च स्तरीय क्रिकेट यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया शॉट रायत का, लेकिन एक ही रन मिला। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पे खेल के दोनों ही बल्लेबाज
49 के स्कोर पर है। देखना है पहले 50 किसकी होती है। हेडन की लग रही होगी क्योंकि स्ट्राइक पर हेडन आए हैं। अब 28 गेंदों पर 49 रन हेडन के और रायत के 38 गेंदों पर 49 रन। बहुत ही बेहतरीन योगदान दोनों के बल्ले से, लेकिन मैच अभी भी पकड़ में है मैवरिक्स के ही। बढ़िया गेंदबाजी और हेडन के 50 रन पूरे इसी के साथ। लेकिन खुश नहीं है हेडन, उन्हें पता है ऐसे अर्धशतक का कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन इनका जो निजी एक आत्मविश्वास होता है वो बढ़ेगा। लेकिन मैच यहां पर मैवरिक्स ने जीत लिया है। 4 गेंदों पर चाहिए। क्या जबरदस्त क्षेत्र रक्षण है, बहुत बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। 3 गेंदों पर अब चाहिए 26 रन। रनआउट की अपील हुई थी वहां पर, लेकिन रनआउट नहीं है। तिरपन पर 4, आखिरी 3 गेंदे और 50 रन पूरे हुए रायत के भी शॉट के साथ। बढ़िया गेंदबाजी, अंदरूनी किनारा, 1 ही रन मिलेगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन। प्रतीक देसाई की तारीफ करनी होगी यहाँ पर फिर से। क्या जबरदस्त अनुभव के साथ गेंदबाजी कराई और बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, दबाव में जो खिलकर बाहर आते हैं और अपनी टीम के लिए स्तंभ है प्रतीक देसाई। 2 गेंदें बची हैं सिर्फ। मैच जीत लिया है मैवरिक्स ने, मात्र औपचारिकता बच गई है इस मैच में। रायत स्ट्राइक पर, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया शॉट, लेकिन रन यहां पर 4 मिल जाएंगे। खराब क्षेत्र रक्षण के चलते एक चौका मिला। ऊपर की गेंद थी और बेहतरीन शॉट यहां पर, और आखिरी गेंद बची है। प्रतीक देसाई हल्के से नाखुश, चौका चला गया। उनके आंकड़े भी खराब होते हैं इसके कारण। 158 पर 4, 19.5 में आखिरी गेंद। प्रतीक देसाई का बेहतरीन ओवर, पिछला ओवर भी जबरदस्त कराया था उन्होंने और इस बार भी बेहतरीन गेंदबाजी। 8 रन दे चुके हैं हालांकि, और ये बेहतरीन शॉट, चौका होना चाहिए ये। यहाँ 4 से खत्म किया इस पारी को और इस मैच को, लेकिन रायत मर्चेंट की बेहतरीन पारी भी इस मैच को जिताना पाई और जेबीसीएन एवेंजर्स ये मैच 16 रन से हार गया है। हेडन और रायत की बेहतरीन साझेदारी, लेकिन दोनों के अर्धशतक भी काम ना आए और मैवरिक्स ने यह मैच बेहतरीन अंदाज में 16 रन से जीत लिया है। और एक बहुत अच्छा मैच टीएसएल में समाप्त होता हुआ द सुपर लीग का एक और बेहतरीन मैच फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर समापन की ओर। और मैं शालीन गुप्ता अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं से विदा लूंगा। एक बार फिर से आप सभी अपना ध्यान रखिए। टीएसएल द सुपर लीग के एक और मैच में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे जल्दी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद।